All right, Bismillahirrahmanirrahim. I have put the recording on as well. Now I would like to, you can say, formally start the course. As I've told you that the main course outline that we will be following is PMI, that is Project Management Institute Standards on Risk Management. So whatever standard they have established, we will try to learn those standards because you will find out that this Project Management Institute is practically involved in only, you can say, as a chartered institute in managing the projects, and they are giving us standards on the basis of which different project management companies are trying to make a benchmark on the basis of which they are laying down their project risk management strategies. Although I have got my, you can say, experience in financial risk management and such kind of thing. I have got, you can say, mostly the experience of handling the financial risk management, but I was, you can say, involved in finding out something that is very, very much relevant to you people. Is there anyone want to ask any question? सर प्लीज सबको म्यूट कर दे तो ये बीच में इंटरप्शन नहीं आएगी. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, वो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप उर्दू में भी बताएं क्योंकि आवाज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो इंग्लिश के प्रॉपर वर्ड समझ नहीं आते. ठीक है, तो थोड़ा इंग्लिश कर लें, थोड़ा उर्दू कर लें, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो जज़ाकल्लाह. ठीक है, पश्तो में भी चल जाएगा सर. एक्सक्यूज मी सर. जी, व्हाई नॉट सर, चल जाएगा. संगदास तो खत्म होगी. पश्तो में तो बहुत इजी होगा. अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर एक क्वेश्चन है, सॉरी सर. पूछना ये था कि हम जो ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, थोड़ा प्री मैच्योर शायद क्वेश्चन है कि टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें से हम कोई सीखेंगे कि हम इन द एंड एनालिसिस कर सकें यार कि टाइप ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई शायद करना और ये सारी चीजें करना. तो शायद exactly that's why I have told you that we will be actually following the PMI standards. So these are the, you can say, a standard that is usually adopted. यानी ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वही स्टैंडर्ड, जैसे हमारे फाइनेंस में अगर आपको मैं बता दूं तो हमारे फाइनेंस में चार्टर्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इसी तरह वो हैं ये IESB हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं. तो ये स्टैंडर्ड इश्यू करते हैं जो कि एक बेंचमार्क बन जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, जिसके मुताबिक वो अपने स्ट्रेटजी क्या करते हैं वो बनाते हैं, प्लान करते हैं. इसी तरह ये जो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है इसमें हमारा मेन कंसर्न यही होगा कि वी लर्न द स्किल्स हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क, हाउ टू क्लासिफाई दिस रिस्क, और फिर उसके लिए जो रिस्क मिटिगेशन के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं, हाउ टू हैंडल दीज रिस्क एज वेल. वो तमाम टूल्स हम इसमें, इवन वी विल ट्राई टू, यू कैन से, लर्न दिस सिमुलेशन टेक्निक्स एज वेल, कि वो जो रिस्क मैनेजमेंट की सिमुलेशन है वो कैसी की जाएगी. ठीक है जी सर, दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जब तक हम इन द एंड टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो शायद एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हम. एग्जैक्टली. तो वो ये मॉन्टे कार्लो वो हैं, टेक्निक्स हैं उसके सिमुलेशन के. इंशाल्लाह वी विल बी लर्निंग दैट एज वेल. ऑलराइट जी, हमारा जो कोर्स है दिस इज प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, तो अगर आप देखे हैं तो यूजुअली यू वुड हैव सम आइडिया अबाउट द रिस्क एज वेल. नाउ बिकॉज यू पीपल आर in second or third semester, you already have got developed an idea of what is management, and you already have developed an idea. सर काइंडली आप ही माइक म्यूट कर देंगे सर सबके. मैंने म्यूट कर दिया है with permission to unmute also. सर समवन को को होस्ट बना दो तो फिर वो ये सब मैनेज करेगा, फिर डिस्कशन नहीं होगी. किसको बता दूं? बल्कि उसी को बता देता हूँ, हमारा जो क्या है. चलो वो बाद में देखेंगे, अब फिलहाल तो मैंने म्यूट कर दिया सबको.
Please, everyone, if you want to ask any question, raise your hand. I will be giving you a chances. So, as I was telling you कि project risk management है, तो we will try to associate कि जो risk management की technique है, how these risk management techniques are adopted and then executed in projects. ठीक है? तो it's I hope you already know what is project, but I will try to, you can say, make my own connection. कि हम एक connection बना दें कि हम जो risk management पढ़ेंगे वो project के context में पढ़ेंगे. So let's try to understand once again what is project. ठीक है? So project is always defined as any temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. Keep in mind the project could be undertaken within, you can say, ongoing business processes. जरूरी नहीं है कि जो project है वो construction project हो या आप कह सकते हैं कि industrial project हो. वो project कोई भी हो सकता है. जैसे आप देख रहे हैं, you would see, like for example, in the software development जो या software houses जो हैं, वहाँ पे एक ही software के अंदर मुख्तलिफ projects create किए जाते हैं. So we will try to understand that as well कि program और project में फिर फर्क क्या है. I hope you already understand. कोई बता सकता है program और project में क्या फर्क है? सर एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे होते हैं. Very good. यानी प्रोग्राम जो है उसका स्कोप बड़ा होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो कंबाइन किए जाते हैं. तो आप देखते हैं एक hierarchical term. Hierarchical terms in a context. सर प्रोग्राम जो होता है उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये hierarchical term है ये. Exactly, ठीक है. यानी जो प्रोग्राम है उसके नीचे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं. Yes sir. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. तो आप देख सकते हैं कि जो भी बिजनेस कॉरपोरेशन है यानी उसके अंदर जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जा रहे होते हैं और उनका जो बेसिक मकसद यही होता है कि हम जब डिक्लेयर करते हैं कि इट्स अ प्रोजेक्ट, सो वो एक टेम्पररी इंडेवर बन जाता है. यानी इट मीन्स कि वो ऑन गोइंग बेसिस पे नहीं रहेगा. टेम्पररी इस तरह होता है कि वन गो में वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोग्राम का हिस्सा बन जाता है. यानी वो फिर जो कंसिस्टेंटली वर्किंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, तो दैट इज यू कैन से अ टेम्पररी प्रोग्राम. लेकिन एक बार वो बन गई है तो देन देयर आर अदर एक्टिविटीज दैट हैज बीन स्टार्टेड. ठीक है. इसी तरह इट्स यूनिक. तो यानी इट इज टोटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर टास्क. जो हमारे पास अदर एक्टिविटीज हो रही होती हैं उससे वो सेपरेटली आइडेंटिफाई की जा सकती है. Properly, if we are defining a project is sequence of unique, complex, and connected activities having one goal or purpose, and that must be completed by a specific time within budget and according to specification. So you can see there are some underlying, you can say, terminologies. These are very much, you can say, necessary to be maintained when defining a project. First of all, in this sequence, it is called as a unique sequence. What does this uniqueness stand for? एक चीज अगर यूनिक होती है तो उसकी स्टांस क्या होती है, किस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रही होती है यूनिकनेस? सर उसकी कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं यूनिकनेस, या वो कैसे being different is uniqueness. Being different यानी being different की वजह से हमारी क्या बनती है? It create our identity. ठीक है. It create our identity. तो जब भी प्रोजेक्ट वो होता है this is unique. If it is unique, so it is identified. So वो identifiable बन जाता है. यानी उसके वो जो टास्क होते हैं that is totally different from other ongoing things. So that's why it become unique. फिर इसमें complexity भी है. Why it is called complex? Why projects are called complex? तो सर यूनिक प्रोडक्ट होगा अगर तो इसका मतलब ये कि हम पहले नहीं वो क्रिएट कर चुके होंगे, तो इसलिए हमें वो काफी कॉम्प्लेक्स सिटी को फेस करना पड़ेगा कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए. वेरी गुड शान, वेरी गुड शान, क्रिएट करने के लिए. वेरी गुड शान. बिल्कुल इसी तरह है
क्योंकि इसमें complexity इस तरह आती है कि complexity usually complexity come whenever, for example, you are handling something for the very first time. And you will find, for example, you might be handling different project, but each project is unique from one another. That's why we say that sometimes we will be required to go through some new experiences. That's why it is called complex. And keep in mind, if something is complex, there is a chances of risk in that as well. If something is simple, you will find out there is no risk involved in anything which is very much simple or straightforward. If it is complex, so definitely we will find out there are some chances of risk that may occur. Another is it is the connected activities. So we can also say that in the operations, the regular operations, when we are talking about, we have to we don't follow the processes. But in project, we follow the processes like stages and the knowledge areas and everything. That makes it distinct and complex as well. Exactly. You are right. Now, what about the connected activities? Usually in project, we say it is made of some connected activities. Execution processes. Execution Yes, process. Yeah, when we are talking about the connected activities, it is like predecessor and successor activities. We have discussed already. We have Very studied good, in. very good. You people would have definitely, you can say, created those critical path method and activities based method, etc., in which you people Yes, sir. actually try to identify different activity and then you connect these activities with each other, and you find out predecessors and then events, and then you find out outcome of that as well. So definitely, Yes. a project is a connected activity, and it's having one goal of purpose, and you will find out all those activity or those connected tasks are actually aimed to, you can say, achieve one goal of purpose. And finally, a project is temporary, so that's why there is a specified time. So that's why it must be completed in a specific time, and then within specific budget, and then according to the specification, that whatever specification we have drawn in the beginning. So keep in mind, a project could be a new product as well. Like for example, if a company is working in order to develop a new product, so a new product development is also a new project. So it is not necessary that every time a project is considered to be a construction of road, construction of you can say canal, or construction, or for example we have CPAC and then these kind of things. But projects could be a very small projects which is carried out within, you can say, one industry or company where they are developing different products. यानी जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट होते हैं तो वो बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, यानी सड़कें बनाना, मेट्रो बनाना और ये करना, बल्कि प्रोजेक्ट को हम छोटे लेवल पे भी देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, तो वहां पे भी तकरीबन ये जो भी एक्टिविटीज हैं वो इसी तरह काम आ रही होती हैं। लेकिन कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करते हैं, जितना प्रोजेक्ट बड़ा होगा उतनी ही उसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, और जितने ही यानी प्रोजेक्ट छोटा होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होगी। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स ऑफ जो प्रोजेक्ट हैं ये अंडरलाइन जो आपने देख लिया, तो यूनिकनेस है इसकी, यूनिक पर्पस है इसका, यानी एक खास पर्पस के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट एडॉप्ट करने से पहले एक गोल डिटरमिनेंट होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट डिजाइन भी किया जाता है और एग्जीक्यूट भी किया जाता है। इट इज अ टेम्पररी एक्टिविटी, यानी अगर वो एक एक्टिविटी कर दी गई, वो गोल अचीव हो गया, तो उसको फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो जो रिपीटिशन आएगी वो एक प्रोग्राम, बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आ सकती है। require resources, definitely whenever you are initiating a project you will be dependent on the resources, often from various areas. That is not necessary that you require a resource of only your organization. You might be dependent on resources to be shared by other organizations as well. Should have primary sponsor or a customer as well. जो प्रोजेक्ट है उसके डिलीवरेबल्स जो हैं वो यूजुअली जो डिलीवरेबल यानी जो प्रोजेक्ट की जो आउटकम है वो हम किसी प्राइमरी स्पॉन्सर यानी उसका होना चाहिए जो कि वो प्रोजेक्ट ऑन करता है, और या वो कस्टमर के लिए होगा। एंड इन्वॉल्व
uncertainty. What is uncertainty? यस सर अनसर्टेनिटी हमारे पास ये है कि जब हम कुछ न्यू बनाते हैं तो हमारे पास उसका एंड रिजल्ट पहले से नहीं होता, तो हमें ये नहीं पता होगा कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इसके अंदर हमारे पास रिस्क के और फ्लॉज के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो सब अनसर्टेनिटी में काउंट होगा। वेरी गुड। और सर्टेनिटी क्या चीज होती है? सर्टेनिटी क्या चीज होती है? सर सर्टेनिटी ये कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं कि ये हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या इसकी अप्रोच है, मतलब हम उसका जो एंड रिजल्ट होगा उसको किसी हद तक काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी में हम अनसर्टेनिटी जो रिस्क होता है वो हम काउंट नहीं कर सकते। वेरी When गुड। everything is अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहती है। I would like to add something here. Can I? Sir, certainty is that anything which we didn't expect that it will happen during the project or before the delivery of the project, any sort of risk which can become obstacle for the completion of the project or success of the project. Okay. May I? This is involved contingent events basically. Hadia wanted to, you can say, comment on that. Yes, sir, I did. Okay, so with projects, certainty is the fact that we know something will happen for sure, or uncertainty jo hoti hai, that is not knowing the income for some that might be the outcome, that might be the incoming problems, the outgoing problems. There might be a lot of things involved. However, I would like to add that there are mostly the things in a project, they are uncertain because we cannot predict external and internal factors to that limit because of obviously human restrictions that limitations that we have. So that's what I wanted to say. ठीक है। Sir, may I answer? जी बताइए अरूज। Sir, uncertainty is just like unknown things, and certainty is just like known things, what we knows and or unknowns. Very good. अच्छा, अब बात करते हैं कि because project is unique, जब project unique होती है तो what do you think the outcomes are usually certain or uncertain? The outcome will be uncertain, sir. Outcome maybe remain uncertain. Definitely. See, whenever we are adopting any project that is something new for us, right? We are going through some activity or task that we are, you can say, performing that we haven't performed before. So usually whenever, like for example, in a program, whenever we are doing something, so we know that whenever this process is carried out, what will be the outcome? In that outcome, the certainty is very high because we know what kind of activities are carried out, and throughout the experience we know that when these activities are carried out, so usually what type of outcome do we get. So that is called certainty. ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि एक प्रोग्राम में हमें पता है कि ये हमेशा हम यही काम करते हैं, ये प्रोसेस